Assalamu alaikum everyone. This is Nasra Huma from the platform of Nurul Huda Education, and we have created an opportunity for the teachers as Teacher on Show. And today, to present, we have Mr. Frozanis with us. I welcome her, and I invite her to please come up with your presentation and what you want to share with us from your experience. Thank you, Mr. Froze, and the floor is all yours, please. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Okay. Okay, let me share my screen first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is a Frozenese, and as you all know that TOS, the Teachers on Show, is going on, and I am the part of this, and my topic is Islam Appalooza. Okay, I have chosen this topic according to the Nurul Huda Foundation has chosen a very critical, very different topic like the emerging trends in education. That's why I have chosen this topic, the Islam Appalooza. Okay, so first let me introduce myself. This is a Frozenese, and I have been teaching physics and mathematics for 15 years, and I am the certified trainer from the Turning Point Training and Consultancy, and I am the founder and director of the Trajectory Training and Consultancy. And I have the core certification on STEM from AQID and the robotics from the STEMers as well. Currently, I am working in Habib Girls Schools and Habib College, and I have been experienced with the different board, and I am the internationally certified personality type based teaching Australia. I have done different workshop and courses from the different renowned institution, and I have been conducting different workshop related to STEM, robotics, and personality and different topics, online and physical both. So this is my little introduction, and because I am the true belief of the need of STEM in 21st century. Okay, so we have the session overview. First, we will discuss about the STEM. Then we have the importance of STEM education. Then how to nurture STEM in the young learners. Then we have the career in STEM education. Then we will talk about the implication of the STEM robotics in a school curriculum. And then at the end, we will share about the how to make the maker space and what are the products and projects required for the maker space and for the STEM classes. So first we have the STEM. So STEM, let me tell you about this. So STEM is the interdisciplinary approach to learning. So this is interdisciplinary approach of learning. It means this is the integrated of the 4 disciplines. So STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. So this is the integrated of the areas of these all 4 disciplines, and we all know that these all 4 disciplines is used in everywhere. Science is everywhere in the world around us. Technology obviously is changing day by day, and we need to know about the technology, and engineering obviously is involved in designing and construction and all over thing. Okay, and the mathematics obviously in every occupation. So we need to understand about the mathematics, because without mathematics we are nothing. We are not able to understand each and everything. So STEM is very necessary to understand. And why STEM is important? So this is the most important question. So why STEM is important? So जो हम पहले एक्टिविटी करते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, दैट इज नॉट स्टैम. क्या वो स्टैम क्या एक्टिविटी नहीं थी? क्या वो स्टैम लर्निंग नहीं थी? तो अब क्यों हम स्टैम पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई स्टैम इज इंपॉर्टेंट. So STEM activity, actually, if I tell you about it, let me tell you about it. STEM is simply is that the hands-on activity. So whenever we do the hands-on activity in schools, and whenever the every students, any students, the hands-on activity, so they will understand more, like
लेक्चर, ओके, जितना लेक्चर से ज्यादा उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करती चीजें समझ में आती हैं. एंड द स्टैम एक्टिविटी, लाइक इफ एनीवन डूइंग द एनी प्रोजेक्ट, so the by doing a project, the different types of the skills developed by doing the STEM activity. Like we have, if we have the different activities, like we have the two types of the skill. Like one is the hard skills and second is the soft skills. So hard skills is the we have the degree, and obviously we are getting and we are doing the we are studying by getting the degrees. But the soft skills is necessary in the 21st century, and by the STEM learning, by STEM education, we can develop the all the types of the soft skills. Like we have in the soft skills like the teamwork, communication, collaboration, critical thinking. So STEM is important इसलिए है कि क्योंकि इससे ये तमाम skills develop होती हैं, because when they do any project, so obviously they collaborate with each other, they communicate with each other. So collaboration and communication and confidence is developed in the children. And the management skills is also developed, like the management skills are like that, the time management and the other types of the management skills developed in the children, okay. And this STEM education, the most important, the problem solving skills is developed to the students and everyone. If anyone skills and if anyone learn the STEM learning, okay, social emotional learning interaction, obviously when anyone interact, they do any project and they talk about each other, they communicate, so they are socially and emotionally strong, okay. And scientific literacy also produce. So that is why the STEM is very important. Let me tell you, let me understand, let me tell you one example. Like we have energy creation. Day by day we have the lack of energy, lack of electricity in our country. So अगर मुझे electricity develop करनी है, like in the past days we have generated electricity with the help of the nuclear power plant and with the wind, okay, and with the water. But now we can create electricity with the solar panel. So this is the technology. So this is the STEM learning, because there is a science, technology, engineering, maths, all the things is involved. So whenever the students think about it, the any problem related to the society, so they have to think about the critically. Obviously, so STEM learning and STEM education develop all types of skills, and whenever they face any type of the problems, they if they have these type of the skills, so they know easily and they get to know how to solve the problem and how to produce and how to innovate each and everything, okay. Next we have the how to nurture. किस तरीके से हम नर्चरिंग करें STEM skills की in young learner. The number one step is to introduce the coding, okay. The coding is very important, okay, and coding is everywhere, okay. अभी मैं आपको आगे अपने स्लाइड में बताऊंगी कि कोडिंग कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं. Like we can introduce we will introduce a STEM learning in summer camps, like after school program, and the maker space provides opportunity to take the traditional learning, okay. So ये आपको real world application से भी आपको मिलाती है, innovative mind create होती है. And the second one is this explore the great outdoor. हम ये कहते हैं कि schools college education को क्या करना चाहिए. Obviously there must be activity, outside activity, okay. There must be educational trip, okay. जब वो जाते हैं तो obviously explore करते हैं, and then they explore, they need to understand all the things, okay. Then the hands-on engineering activity is must involve and must adding in school curriculum, and encourage students, encourage children to ask what and why question. जब वो what और why question करेंगे तो उनके अंदर भी बहुत सारी skills develop होंगी, बहुत सारे questions आएंगे कि ये क्या है और क्यों है और हम क्यों कर रहे हैं, ये सब पर्पस के. जैसे हम STEM की मैं भी बात कर रही हूँ obviously कि why the STEM is learning, why the STEM is spreading day by day, and why the STEM is throughout the world. The STEM is the curriculum is in the curriculum part. STEM जो है throughout the world जो है ये curriculum का part बन चुका है हर जगह पूरे world में. But in unfortunately अभी पाकिस्तान में जो है वो curriculum का part नहीं बना है, लेकिन अभी होपफुली बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. दे आर स्टार्टिंग एंड दे नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ STEM एजुकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द importance the education STEM and robotics and the coding, okay. So introduce all these things and introduce all these activities in obviously
in curriculum. Okay, we must introduce all these things. So what is a STEM? We have discussed about the what is STEM and why the STEM is important. Obviously, the different types of the soft skills is necessary, is very necessary to introduce in the classes. Okay, the next we have the career. Okay, career in STEM education. Okay, when we talk about the STEM education is important. So the career in STEM education, what are the careers? So there are the many careers. This is not necessary for the only the computer students or the science students or only the mathematics students. This is necessary for the all, because the soft skill is necessary for all students, because when they completed their education and when they come into the application in the real world problem, when they face real world problem, even they are at home, so obviously they have many problems. So if they have the soft skills, so they are able to understand and they are able to capture and they are able to solve the problems. Okay, so we have the career in energy, in pharmacy, in web developer, in athletic, in computer science, obviously, in psychologist, and in pharmacy and in the medical university as well. If let me tell you about हमने last year जो है हमने सर्वे किया था बच्चों को लेके आगा खान हॉस्पिटल में, एंड आई वाज शॉक्ड देयर इज अ रोबोट जो कि मशीनरी रोबोट जो है जो कि मशीन पे वर्क कर रहा है. तो ऑब्वियसली रोबोटिक्स एंड रोबोट, ऑब्वियसली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेम लर्निंग. तो इट मीन्स कि हमारी कंट्री में भी ये सारा काम हो रहा है, रोबोटिक्स पे भी बहुत सारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी होगा. ओके, अब मैं आपको ये अगर फिगर दिखाऊं, दिस इज द रिसर्च कि स्टेम की जो करियर है और स्टेम एम्प्लॉयमेंट जो है, स्टेम लर्निंग की ग्रोथ जो है इस बार स्केल से यू कैन अंडरस्टैंड इन 2000 टू 2010 में इसके बार स्केल की ग्रोथ 7.9% थी, एंड 2008 टू 2018 ओके इसकी ग्रोथ जो है वो 17% जो है हो गई है. और अब आप देख सकते हैं कि ये 2014 देन 2018 एंड देन 2028 इसका फिगर आप देखें, इसकी लाइन जो है वो इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है कि इफ स्टेम लर्निंग में जो कैरियर है और स्टेम एम्प्लॉयमेंट जो है, ये जो ब्लू लाइन दिस इज द नॉन स्टेम एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स कि एवरीवन मस्ट अवेयर द स्टेम एजुकेशन because in the future they are not getting the good job because these research tell us about it. ये researches हमें बता रही हैं कि यूएस ने वैसे भी जो है वो 20 इयर्स पहले ही बता दिया था कि आगे आइंदा आने वाले इयर्स में जो स्टेम जो है, जिस एम्प्लॉयमेंट और जो हम उसकी बात करते हैं जॉब्स की, तो जो स्टेम से जो है वो रिलेटेड होगा, जिसकी स्टेम एजुकेशन अच्छी होगी, जो स्टेम जो है वो आपके पास लर्निंग किया हुआ होगा, तो उसके अंदर जो सॉफ्ट स्किल होंगे उसको उसके साथ उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा. और ये स्किल्स हमें बता रही हैं, ये रिजल्ट हमें बता रहा है. अभी मैंने बात की कि देयर आर द मेनी स्टेप्स जिस तरीके से हम नर्चरिंग कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने डिस्कस किया कि कोडिंग इज इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस इन द क्लास. And coding means like programming. Okay, this is the writing the instruction for a computer. Okay, and this is the finished set of the computer instruction. It is like the maybe called the programming. Okay, and आपको पता है इस coding में बिल गेट्स का सबसे बड़ा नाम है और बहुत सारे यंग टैलेंटेड है जो कि प्रोग्रामिंग में और कोडिंग में अपना नाम कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स ने भी ये बात कही है कि learning to write programs stretches your mind and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains. ये अभी हमने जब बात की कि स्टेम इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये आपको क्रिटिकली थिंकिंग जो है वो करता है और ये सारे सॉफ्ट स्किल करता है. तो बिल गेट्स ने कहा कि जब हम स्टेम लर्निंग में जब हम कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ द स्टेम, तो जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कोडिंग भी आपके माइंड को स्ट्रेच करता है और आपको जो है वो बेटर थिंकिंग प्रोवाइड करता है. और इसके साथ में किसी राइटर ने भी कहा है कि लर्निंग टू कोड इज अ लर्निंग टू क्रिएट एंड इनोवेट. राइट, so this is the maker space class and this is the STEM class. So there are the many schools created the STEM classes or throughout the world एक word use होता है STEM classes के, that is the maker space.
where I'm working in Habib Girls School and Habib College, there is also the maker space class. Okay, where we have the different project related to the STEM activities and we have the different reports. Okay, तो वहां पर हमने इसको नाम मेकर स्पेस का, थ्रू द वर्ल्ड दिस इज द नेम ऑफ द मेकर स्पेस. सो यू कैन क्रिएट, आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने स्कूल में एज अ हेड, एज अ लीड जो है, एवरीवन मस्ट इंट्रोड्यूस. ओके, so like we have the different types of the activity, different types of activity introduced in STEM classes. Like we have the paper building, like marshmallow building, like the cast और इसके अलावा we have different science projects related to the energy, related to the biology, related to chemistry, but they must be integrated. Okay, they must be like integrated, like there must be integrated with the 4 disciplines obviously, and STEM activity is also introduced in the different subjects as well. Okay. Okay, now STEM education in school, या हम बात करते हैं कि मेकर स्पेस प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट. तो स्टेम एजुकेशन इन स्कूल, स्टेम एजुकेशन को हम किस तरीके से स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाएं और स्टेम एजुकेशन को हम किस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो मेकर स्पेस के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. दिस इज वेरी नेसेसरी. यहाँ पर मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशन में स्टेम लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. तो जो स्टेम लर्निंग को जिसने अपने स्कूल में या अपने जो भी एज अ हेड या एज अ लीड या एज अ टीचर भी वो अपने क्लास में भी कर सकते हैं. तो if there is no class, if there is no any separate room for the STEM, but as a teacher you can create the STEM activity, you can introduce a STEM activity in your class as well. Okay, so like we have different types of the activities. Okay, and now regarding the activities we have, if you're talking about the coding, okay, अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो कोडिंग में भी हैव द डिफरेंट ऐप जो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बच्चों को, और ये हम इस तरीके से स्टेम की एक्टिविटी जो है अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा करके उनके अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप करवा सकते हैं. लाइक फर्स्ट वी हैव द स्क्रैच. Scratch is the free MIT software where the students can make the games, can make the stories and animation as well. Okay, there is a block based coding and there is a game as well. Okay, so this is the first application. Number 2 is the Tinkercad. If I'm talking about the Tinkercad, so Tinkercad is also the free app. Okay, everyone can introduce in the school. So this is a very simple app, and there is the students can do many activities. They can make coding, and they can make the very different types of the electronics activities. यहाँ पर हम electronic related activities यहाँ पर बच्चों को introduce करवा सकते हैं with the help of the Tinkercad. तो Tinkercad is also the free software. यहाँ पर हम easily इसको introduce कर सकते हैं. Okay, next is the robotics, robotronics. Robotronics में इसमें हम electronics से related बात करते हैं, Arduino projects की बात करते हैं. So we have breadboard, we have different LEDs, and this is all not very expensive. This is very cheap. We can introduce. So these all the pictures is related to my Facebook group where my students can do this all the projects. And you can see, you can overview over there कि वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स ने ये सारी एक्टिविटी की है, तो वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी और कर सकते हैं क्या है, तो यू कैन सर्च ओवर देयर. ओके, तो ये एक्टिविटी आपको बच्चा जब ये कर रहा होता है ना, उसके अंदर इतनी इनोवेशन क्रिएट होती है, और सबसे मजे की बात है वो फन के साथ करता है और उसको बहुत मजा आता है ये सारी एक्टिविटी करते हुए. तो ये और वही वाली बात है, बार बार कहूंगी स्किल्स की. दिस इज द Arduino RC car. This is also made by my student. Okay, with the different sensors and with the Arduino. Okay, this Arduino, this is the open source electronic platform है. This is the hardware and software both. Okay, and this Arduino, इससे हम with the help of battery अपना कार, robotic कार बना सकते हैं ये easily. ये कार आप देख रहे हैं, तो this is very easy for everyone के ये स्टूडेंट जो है वो, मेरे पास 7 years का भी बच्चा होता है, मेरे पास 50 years के भी खातून है जिन्होंने ये रोबोटिक कार बनाया है.
तो क्यों ना हम सब ये कर सकते हैं, क्यों ना हम सब ये इंट्रोड्यूस करवा के, क्योंकि समटाइम्स ये बहुत मुश्किल लगता है कि इसको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत मुश्किल है. ओके, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेगोस. दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज फॉर ऑल grades, all ages in preschool and elementary and middle school. Okay, this is also included in your school as well. The next one is the M board. Okay, M board is open source, obviously construction platform है. इससे हम सिंपल रोबोट को, वो आपको इंजीनियरिंग टाइप रोबोट नजर आता है. दिस इज रोबोट लाइक हम इससे रोवर भी बना सकते हैं. रोवर इज लाइक जो हमने मार्स में भेजा था, मार्स में रोवर भेजा गया था जिसने वहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है, वहां का टेम्परेचर, वहां का लाइट और वहां का जो है वो सारा वेदर चेक किया था. ओके, तो ये जो है इससे हम ये बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर. ओके, एंड देन वी हैव द माइंड स्टॉर्म. ठीक है, माइंड स्टॉर्म है, हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर सकते हैं. और इसके अलावा ओजो बोर्ड. ओके, ओजो बोर्ड इज ऑल्सो, दिस इज द रोबोट कंट्रोल है. ठीक है, अच्छा ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, these all types of robots we can introduce and different schools are applying. बहुत सारे schools जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, इस पे वर्किंग कर रहे हैं. and this is all programmable robot. Okay, this is all programmable robot. ये सब प्रोग्रामेबल रोबोट है जिसमें मैंने बात की कोडिंग की, कि कोडिंग इज इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस फॉर द स्टेम लर्निंग. तो जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इजिली. नेक्स्ट इज द मैकी मैकी. ओके, तो मैकी मैकी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने स्कूल में. नेक्स्ट इज स्पाइक प्राइम. स्पाइक प्राइम इज इंट्रोड्यूस इन आवर स्कूल. अभी हमने अपने स्कूल में स्पाइक प्राइम इंट्रोड्यूस करवाया इन हबीब गर्ल्स स्कूल लास्ट. एंड दिस इज ऑल्सो द प्रोग्रामेबल रोबोट. दिस इज अ प्रोग्रामेबल लेगो बिल्डिंग एलिमेंट्स है, जो कि जिसमें हम कोडिंग कर रहे होते हैं, स्टैम लर्निंग कर रहे होते हैं, और जिसमें तमाम ग्रेड्स के जो है वो बच्चे इजी कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज वीडियो. वीडियो हमने वी इंट्रोड्यूस इन द लास्ट ईयर इन हबीब गर्ल्स. तो वीडियो करने के बाद नाउ वी इंट्रोड्यूस स्पाइक प्राइम. ओके, सो वीडियो जो है एटलीस्ट कोई 4 years पहले, 4 साल पहले, अगर आप जो है वो शहजाद रॉय के फाउंडेशन को, जिंदगी ट्रस्ट को जानते हो, तो वहां पर इंट्रोड्यूस ये करवाया गया था. वहां पर ये एक्टिविटी हमने करवाई थी विद द हेल्प ऑफ द वीडियो. तो उन बच्चों ने भी किया है. तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जिसमें हमारे पास मोटर्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं. तो रोबोट हमारे पास जो है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द ऑब्वियसली स्टैम्प. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट फील्ड्स पे the robots are working even throughout the world. If I'm talking about the Japan, in Japan in the restaurant there is a chef. Okay, वहां पर जब आप डिलीवरी करवाते हैं तो obviously there is a bird robot. वहां पर बर्ड रोबोट है, या वो बर्ड रोबोट जो है वो काम करते हैं उस पे कि आपको डिलीवरी करते वक्त जो है वो बर्ड रोबोट फौरन ही विद इन अ मिनट आपको जो है वो मिल जाता है, आपका जो भी जो है वो है. ओके, तो देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ स्टेम लर्निंग. यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें शॉर्ट टाइम में इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि क्योंकि बहुत सारे के माइंड में ये चीज होता है कि स्टेम लर्निंग में हमने क्या करना है, क्या चीजें करनी है. तो बहुत सारी चीजें मैंने सम अप करके यहाँ बताई कि यू कैन इंट्रोड्यूस. आप स्टेम एक्टिविटीज में आप डिफरेंट साइंस की छोटी छोटी एक्टिविटीज से भी करवा सकते हैं. बिल्डिंग्स बना सकते हैं, मार्शमैलो से बना सकते हैं, आप पेपर से बनवा सकते हैं. उसके बाद आप स्क्रैच प्रोग्राम के लिए और आपको टिंकर कैट के लिए देयर इज नो नीड टू एनीथिंग. देयर इज नो नीड. ओके, देयर इज नो नीड of any hardware things. आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर is required. Okay, so with the help of the software, with the help of the Scratch and Tinkercad, okay, so these are a free software and you can use in your school. Okay, जहां आप यूज कर सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बिकॉज स्टेम लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आज हमारा बच्चा कम्पीट नहीं कर सकेगा अगर हमारे बच्चे ने स्टेम लर्निंग नहीं की, क्योंकि यही है सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, और सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत आपके हर फील्ड में रहती है. इसके अलावा अगर ये सब कुछ के साथ भी वी हैव वर्चुअल रोबोटिक्स एज वेल. वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर जहां पर अगर आपको आपके हैंड्स में आपको भी अवेलेबल नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इतनी सारी मैंने चीजें आपको बताई है कि देयर आर मैनी थिंग्स दे आर वेरी चीप, जिसमें से बहुत चीप भी है, कुछ हाई प्राइस भी है. तो यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर स्कूल. ओके, सो एट द एंड एक कोटेशन के साथ ये मैं एंड करूंगी. ऑब्वियसली वी हैव शॉर्ट टाइम कि इसाक एसिमोव ने ये कहा है, इसाक एसिमोव इज द फर्स्ट वन जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था रोबोटिक्स को, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था रोबोट को. उसने कहा है इट हैज बीन माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ दैट डिफिकल्टीज वैनिश व्हेन फेस्ड बोल्डली. तो ऑब्वियसली हमें करना है
कोडिंग इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज कोडिंग डेवलप्स द computational thinking, and computational thinking creates your different types of, like your develop the trial and error, and develop your logic. Okay, logic creates करता है, आपको logic बताता है, reasoning बताता है। तो ये computational thinking is very important to everyone कि किस तरीके से हमें डेवलप करता है। और एक छोटी सी बात के साथ मैं अपना ये सेशन एंड करूंगी कि मैंने एक बात पढ़ी थी, हम यहाँ पर स्किल्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो संजय गुप्ता ने अपनी बुक में, कीप शार्प की बुक में एक बात कही, उसने ये कहा है कि अपने माइंड को, अपने कॉग्निटिव एबिलिटी को, अपने कॉग्निशन को अगर आपने डिक्लाइन से बचाना है, अगर आपके एज के साथ अपने अपने माइंड के शार्पनेस को बचाना है, उसको डिक्लाइन नहीं करना है, तो आपके उसके लिए एक टिप उसने बताई कि आपने अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम न्यू स्किल्स डेवलप करने हैं। तो जब आप न्यू स्किल्स सीखते हैं तो आपके माइंड की कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, दिस इज माय कॉन्टेक्ट, जहाँ पर आप ये सारी एक्टिविटी भी देख सकते हैं और काइंडली से इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। थैंक यू। Thank you so very much, Afroz. I have a question that you talked about different techniques and different programs that you use for STEAM and STEM. How are you applying it in your school, in your science lessons? I would like to know that. Yes, which I am telling you about. There is a spike prime in our school where I am working in Habib Girls School. Okay, and there is a spike prime, and we have introduced a video in the last year. Okay, so we have different types of the Legos. यहाँ पर Legos, this is the movable Legos, and these are the programmable Legos. ये programmable है, जिसे आपने connect करना होता है, उसके बाद हम इसमें program करते हैं, प्रोग्राम करके इसको फिर जिस तरीके से एप्लीकेशन होती है उसको मूव करवाते हैं। ये तो हमने रोबोट्स की बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स हैं, जिसमें मैंने स्पाइक प्राइम की बात की, मैकी की बात की, ओजो बोर्ड है, माइंड स्टॉर्म है, जो डिफरेंट लेवल्स के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, ये एक आर्डिनो आरसी कार है जो मेरे पास बच्चा 7 साल का भी बच्चा बना सकता है, और एक 50 इयर्स की खातून ने भी मेरे पास जो है वो कनाडा की, उन्होंने ये बनाया है, ये उन्हीं के पिक्चर है। अब ये आप इंट्रोड्यूस इसको करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। ये आप पार्ट्स इसको परचेज करके, और ऑब्वियसली यू मस्ट हैव द ऑब्वियसली स्टैम्प लर्नर सर्टिफाइड, ऑब्वियसली ट्रेन टीचर होना चाहिए जिससे ये सारी चीजें हो, तो आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसके साथ मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास ये चिप है, ये जो ब्रेड बोर्ड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी बनाते हैं, जिसमें हमने ट्रैफिक सिग्नल्स का बनाया है। आपको पिक्चर ऊपर जो 3 LEDs नजर आ रही है, ट्रैफिक सिग्नल है। इसके अलावा जो बैटरी के साथ है, ये स्ट्रीट लाइट सेंसर है, जहां पर हम बात करते हैं कि रात में जब आपके पास जब अंधेरा हो जाता है तो आपके लाइट ऑन हो जाती है, तो वो आपके पास एक सेंसर होता है, उस सेंसर के थ्रू जो है वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, जिसे हम LDR सेंसर कहते हैं। ये LDR सेंसर अप्लाई हुआ हुआ है, और ये सब कुछ हम आर्डिनो के साथ कर रहे हैं। और ये आर्डिनो जो है, ये जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब हम इसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जब कनेक्शन के बाद हम इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इसमें हम M ब्लॉक की कोडिंग करते हैं, और कोडिंग के बाद देन दे आर एबल टू रन। टिंकरकैड मैंने कहा दिस इज द फ्री सॉफ्टवेयर, स्क्रैच मैंने कहा फ्री सॉफ्टवेयर, जिसमें बच्चे गेम्स बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और अभी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है हबीब में, जिसमें मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स करवा रही हूँ। एंड एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में जिसमें बच्चे डिफरेंट जो है वो एप्स बना सकते हैं अपने मोबाइल पे। ओके, अगर मैं एक आपको दिखाऊं, मोबाइल अगर नजर आ रहा है, एक ऐप बना हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट जो है वो एनिमल्स लिए हैं, और इसमें आवाज आती है इनकी कि इनके साउंड को जो है वो आपने रिकॉग्नाइज करना है। Afroz, if I may stop you please for a moment, you still haven't answered my question. My question was that साइंस का एक करिकुलम सिलेबस होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स कीप एक्चुअली ग्रम्बलिंग अबाउट इट कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम एक्टिविटीज करवा सकें. सो हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग ऑल दिस इनटू योर साइंस करिकुलम and what skills are you developing through these activities? This is what I wanted to know. इसके लिए we have the 2 ways ना, you have to introduce only one, आप इसको अलग से सेशन बनाएं, ओके, per week for only 1 hour fixed for the STEM learning या STEM activities. Okay, this is the one way to introduce the STEM activities in your class. The second way teacher can introduce if they are teaching the science subject or math subject.
सो रिलेटेड टू देयर टॉपिक, आप अगर वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हैं तो उससे रिलेटेड क्लास में कोई एक्टिविटी वीक में वन टाइम वो करवा सकती हैं, जिसमें बच्चे में स्टैम लर्निंग डेवलप हो सकती है। क्योंकि इसके लिए मैंने यहाँ पर इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपने यहाँ पर क्लास में आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि समर कैंप करके या आफ्टर स्कूल प्रोग्राम आपने 1 आवर के लिए रखे फिक्स, या वीक में आपने 1 घंटे की क्लास रखनी है जिसमें आप स्टैम एक्टिविटीज करवाएं। क्योंकि ये स्टैम एक्टिविटीज करने से ही, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये एक्टिविटी जो स्किल्स है ये वाली प्रोड्यूस होती है बच्चों में। तो इस तरीके से वी कैन इंट्रोड्यूस द स्टैम एक्टिविटी इन योर क्लास। टीचर भी इंडिविजुअली करवा सकता है और स्कूल भी जो है वो ऑर्गेनाइज करके ये एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा सकता है अपने स्कूल में। आपके पास कोई एक सेशन फिक्स करना पड़ेगा इसके लिए।